Students, today we will continue with our last unit, web applications and security, and we will proceed with chapter 2, the session 2, which is about networking fundamentals, means the networking basics. So I'll start with your PDF which I have shared with you from CBSE. Session 2, networking fundamentals. You all are aware about computer network. You have read in your lower classes that network is formed when a number of computers are connected with each other through some communication channels. Maybe it is connected with the help of cables or by some wireless means through satellites. Now, why they are shared? For allow to share of resources, data and information. So here we will know about some basic concepts of networking and internet, and also about different types of internet connections. So first of all, we need to know about the architecture of network. Network architecture means the designing of network. So there are basically two types. One is peer-to-peer architecture and other is the client-server architecture. Peer-to-peer means, as I told you in your junior classes also about peer-to-peer architecture, peer means, the word peer means friends or pals, like same people of equal status, friends, cousins and all that. So when the computers with equal status, their equal configurations, they are shared or they are just connected to each other, so that forms that type of network is called as peer to peer architecture. Okay, the networks in which all the computers have an equal status are called peer to peer networks. जब भी किसी को रिसोर्स, कोई क्लाइंट है, अगर एक कंप्यूटर क्लाइंट है तो दूसरा सर्वर बन जाता है. अगर वो सर्वर को कोई फर्दर कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी और कंप्यूटर को, तो वो क्लाइंट बन जाता है, तो दूसरे वाला server. So in this, everyone can act as server and everyone can act as clients according to their need of their information sharing. So generally in such a network, each terminal has an equally competent CPU. As I told you that these computers have equal status. Then comes the client server architecture. As the name indicates, client server means there are many clients and one server. And server is the main computer which is having, which has some dedicated task, and it is the most powerful computer which in turn is providing services to other computers in the network. They are called as the client server networks. So the computers which provide services are called servers, and the one that use these services are called clients. Then about types of networks, this also you have read in your lower classes. You have read about LAN, WAN, MAN, PAN and CAN. Okay, according to the geographical limitations, we have the network is being categorized into different categories. So but the major network categories are LAN and WAN. Okay, LAN stands for local area network and WAN stands for wide area network. So local area network means some means जिसका एरिया बिल्कुल लिमिटेड है. सपोज आपके घर में ही हमने एक नेटवर्क लगाना है, या स्कूल के अंदर ही उसको इस्टेब्लिश करना है नेटवर्किंग को बाय द हेल्प ऑफ वायर्स, और इन योर कंप्यूटर लैब और ऑफिस और सम क्लोजली लोकेटेड बिल्डिंग्स. ओके, then the range is just one or two approximately 1 or 2 kilometers. Then usually they offer very high speeds and are used for connecting computers, and especially the peripheral devices like printers, and these devices can be easily shared.
Okay, suppose some person is sitting in um, lab 1, and in lab 2 we are having a printer and there is a networking, so he or she can give a command and get the output for the same. So printer can be shared. Next is wide area network. Wide area means a large area, means a broad area. ठीक है, basically it is covering the whole world. So it covers a broad area, that is any network that links across metropolitan, regional or national boundaries. So if I say that WAN, the best example is internet. Okay, because internet is being globally used everywhere, in every corner of the world it is being used. And how these connection is interconnectivity of these computers is possible? Of course not by cables or wires. So it is only possible by your satellite signals, telecommunication satellite signals. Okay, the internet is the most popular WAN and it is used by, of course, businesses, governments, non-profit your NGOs, individually people use it, entertainers, artists, etc. Then internet you people know it is a global system of internet connected computer networks that use the standard IP suite to serve billions of users worldwide. Like internet, again, it is a network of networks to share information. Millions computers network are interconnected. So you all know about the uses. Next come is World Wide Web, again abbreviated as www or W3. And you know it is a like a huge mall where you can get everything. You can get information, textual information, any image, any graphics, any videos and other type of multimedia, audio, songs, and you can of course navigate between with the help of hyperlinks. So information is stored on the web servers referred to as web pages. ठीक है, वेब पेजेस से ही तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और हम इन वेब पेजेस को वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं. द मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, से योर गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, etc. Microsoft Edge, and there are a number of browsers. So, a web browser is a software used to view websites and act as an interface between the user and the www. See, if you don't have a web browser, then how we will access the information? So, it is a medium. Then web server, very important term. Web server is a computer that stores websites and their related files for viewing on the internet. So this is the main your computer. Next is the advantages associated with networking. Of course, data sharing, file transfers, hardware sharing. As you know, if you suppose you have a laboratory working and internet is there and it is networking is also there, and 15 computers are sharing one CPU, so you don't need to purchase peripheral devices for every single computer. One printer can be attached to the server and those clients can easily use that printer. So this is the example of hardware sharing. Internet access sharing, yes, so another important example, we just take one connection and that connection is being shared throughout your school or college campus, for your browsing centers, etc. Okay, then you have usage of network based applications like email clients, chat app. So many apps are there. Now we are so much dependent on these apps like your audio video callings and so many other programs, apps. We are highly dependent on these. So this is the biggest advantage of internet. देन गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट. अब इंटरनेट तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे इंटरनेट का कनेक्शन हमें मिलेगा? सी अर्लियर वी यूज टू हैव internet connections through these major ISPs. ISPs means internet service providers like
BSNL, Bharat Sanchar Nikam Limited, and MTNL, Airtel, then came Airtel, Reliance, Vodafone, MTS, and your Docomo. Now, these are the main ISPs. So, ISP is an organization which provides you with access to the internet via a dial up or direct or wireless connections. Now, in your upcoming session, we are going to study about what these dial ups and direct or wireless connections are. Okay, next is modem. Now, these are the terms which are used in your internet. First is modem. Modem is a device which is converting your digital computer signal into a form analog. ठीक है, एनालॉग क्या होता है? एक आपका जैसे एनालॉग की एक वॉच होती है, ठीक है, एक डिजिटल वॉच होती है, एक एनालॉग वॉच होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर मॉडेम क्या करता है? जब हमारा मॉडेम कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो कंप्यूटर इज रिलीजिंग द डिजिटल सिग्नल, दैट सिग्नल मॉडेम इज कन्वर्टिंग इनटू एनालॉग फॉर्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। फिर जहाँ पे जब आपका ये सिग्नल ट्रैवल होगा किसी मीडियम पे, सिग्नल विल ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, बिट्स. So once it reaches its destination, then there also that modem will again reconvert that analog signal back into the digital signals. That process is called demodulator. So this is the function of modem. Next is type of internet, common internet connectivities. See, it is widely categorized into wired and wireless. So we have here six, you can see here six types. First is dial up. Dial up was a wired connectivity. DSL wired, ये आपके MCQ में आ जाता है. Like dial up is a dash internet connectivity. So answer is wired. Cable internet connection is a dash connectivity. So 3G is a dash internet connectivity, wireless. सो टू स्टार्ट विद डायल अप, जब सबसे पहले इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो तभी लगता था अगर आपके पास टेलीफोन लाइन आपके घर में होती थी, ठीक है, तो जो टेलीफोन आपके घर में होता था BSNL का ही होता था तब, तो टेलीफोन की वही वाली जो वायर अब फ़ोन में से निकाल के हम लोग मॉडम में लगाते थे, एंड द स्पीड वॉज रियली वेरी वेरी स्लो. So this was the very starting your internet connectivity. ठीक है, dial up internet connect access is a form of internet access that use the facilities of the public switched telephone network. मतलब हम टेलीफोन में से वायर में से वो पिन निकाल के अपने मॉडेम में लगाते थे, ठीक है, and very after a couple of minutes it used to connect and very slow speed was there at that time. Then came dial-up connections. Dial-up were also extremely slow but better than your yes, dial-up connections are extremely slow, and in most cases then it was over replaced by DSL. ठीक है, आफ्टर डायल DSL लाइन केम. DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. व्हाट हैपन्स कि हमारे मॉडेम के अंदर ये एक सिग्नल आता है, ठीक है. सो इसका पर्पस क्या है कि इंटरनेट एक्सेस, इट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क. ठीक है, तो हमें वो वायर निकालनी नहीं पड़ती थी फ़ोन से, डायरेक्ट DSL से ही हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी लग जाती थी, ठीक है. एंड व्हाट DSL डज, ये सारा ट्रैफिक रिमूव करता था, सारा फिल्टर करता था, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. देन इट इनेबल साइमल्टेनियसली यूज़ ऑफ टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशन. मतलब जो हम टेलीफोन यूज़ करते थे, टेलीफोन भी हमारा चल रहा है और हमारा इधर से इंटरनेट भी चल जाता था. बट डायल अप में ऐसा नहीं होता था. जब हमने तार निकाल के उसकी फ़ोन में से निकाल के हमने अपने उसमें डाल दिया तो हमारा सिर्फ हम इंटरनेट चलता था. ओके, एंड फॉर यूजिंग अ DSL कनेक्शन यू नीड अ DSL मॉडेम एंड अ सब्सक्रिप्शन. देन कम्स cable internet access. This is the third type. Again, these three connections, they are wired connections. So cable internet access is a form of
ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, अब ये ब्रॉडबैंड आ गया था, ठीक है, दैट यूजेस द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपके घर में केबल टीवी की वायर आती थी, इसी तरह से हम अप्लाई कर देते थे इंटरनेट के लिए, तो वो हमें केबल दे देते थे। सो इट इज़ प्रोवाइडेड through existing cable TV networks. It is also similar to DSL, that is provided over existing telephone lines. Fine. Then comes your 3G. 3G, now comes your wireless internet connections. The first one is 3G, short form of third generation. ठीक है, उसके बाद 3G आया, थोड़ी सी स्पीड में थोड़ी स्पीड इसकी अपग्रेड हुई, स्पीड बढ़ी, ठीक है, हाई स्पीड आया, ठीक है, एंड हाई हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड्स एंड कैपेसिटी. फाइन. नेक्स्ट इज वाईमैक्स. वाईमैक्स एंड वाईफाई, यू नो अबाउट वाईफाई. ठीक है, वाईफाई में क्या होता है कि आपको जो इंटरनेट, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क. ठीक है, तो हमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती. विद द हेल्प ऑफ वायरलेस राउटर वी कैन, द इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड बाय मोबाइल फोन्स और PC, स्मार्टफोन्स, video game consoles, etc. Fine. And they can also connect to a network resource through WAP, wireless access point. Now WiMAX, what is WiMAX is, WiMAX जैसे वाईफाई की रेंज कम होती है, ठीक है, WiMAX का है फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. as the name suggests, of course it is giving you a Wi-Fi but in a large range. ठीक है, माइक्रोवेव एक्सेस मीन्स कि जो एरिया है वो एरिया ज़्यादा है. ठीक है, इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिज़ाइन टू provide mobile broadband connectivity across cities and countries through a variety of devices. So it is, WiMAX is a long range system covering many kilometers. ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, देखो इसकी रेंज किलोमीटर्स तक है. वाईफाई की तो बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम रेंज होती है, फ्यू मीटर्स ओनली, जस्ट थिंक. बट वाईमैक्स कैन कवर फ्यू many kilometers. Then comes Wi-Fi. I have told you the full form is wireless fidelity. So it is, we people use Wi-Fi for our internet connectivity. So Wi-Fi is used where cables cannot run, like your old buildings, or like there is some problem in the wire fittings. Next is data transfer on the internet. Now we are talking about internet and internet devices and but how come this process is going on? Having talked of data transfer, now how a person is sitting in one corner of the world, he can get that page, जो पेज वहाँ से डिलीवर हुआ, वो एक दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में कैसे डिलीवर हो गया. ठीक है, what happened now, this piece of data, suppose a web page, this is divided into packets. ठीक है, हर एक पैकेट का एक हेडर भी लग जाता है. ठीक है, जैसे एक लेटर होता है, लेटर पे भी हम लेबल लगाते हैं ना, बाहर स्टैम्प लगाते हैं एड्रेस का कि इस लेटर ने यहाँ तक जाना है. तो डिजिटली टॉकिंग अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, डिजिटली भी ये ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. ईच द डेटा इज डिवाइडेड इन टू पैकेट्स, एंड देन these packets, what happen, these packets are again, इनके ऊपर हेडर लग जाता है कि इन पैकेट्स ने कहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है. जहाँ पर ये पहुँच जाते हैं वहाँ फिर ये रीअसेंबल होते हैं. एंड देन, और अगर मान लो कहीं बीच में कोई पैकेट्स डैमेज हो गए या मिस हो गए, देन अगेन दिस मैसेज विल बी सेंट आस्किंग टू रीसेंड. Okay, so this process continues until all the packets have been received intact on time. Now they are reassembled in their original form. So this is done in seconds. जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या करता है. Now इसमें एक और कंसेप्ट है which your CBSE has not told you, the process of
इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. व्हाट हैपन जब आपका सपोज हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, टेक्स्ट में भेज रहे हैं, आप MP3 भेज रहे हो, आप एक वीडियो MPG भेज रहे हो, यू कैन सेंड एनी फॉर्मेट ऑफ डेटा. तो जो ये डेटा है MP3 आपने भेजा है, या आपने टेक्स्ट फाइल भेजी है, या आपने वीडियो भेजी है, ये उस फॉर्मेट में नहीं जाएगी, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. फाइन. द डेटा, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन. ठीक है. विच इज़ नॉट रीडेबल, नॉट एक्सेसिबल. एंड वेन दैट योर मैसेज विल रीच द डेस्टिनेशन, वहाँ पर उस एंड पे वो फिर डिक्रिप्ट होगा. ठीक है. वापस वो उसी फॉर्मेट में MP3 या MPG जो होगा उसी में वहाँ पे पहुँच जाएगा. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन एंड decryption, so which they have not told you. So this was all about your session. Thank you, students.